Good morning, everyone. So आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है that is also part of physical layer only and that is multiplexing. So आज I think आपका ये वाला करके there will be only one topic left, that is switching, that is related to your physical layer. But I'll give this PDF today and switching के लिए I'll make another new PDF. या फिर I can add switching here only and आपको फिर बाद में कंबाइन करके आज तो दे दूंगी मैं आपको कि रिवीजन करना होगा आप लोगों को. So I'll add switching here only and then I'll give you the PDF. Okay. So first thing that we have is multiplexing. Okay. So if you have heard this word multiplexer, so multiplexer is used for multiplexing. So now what is multiplexing and why do we need it? So we have already studied what is bandwidth, right? So now we have been given the bandwidth, but how do we utilize it? Why do we utilize bandwidth and how we have to utilize it and how we can achieve the efficiency that we have to achieve while using our bandwidth and the medium. So bandwidth utilization is the wise use of available bandwidth to achieve specific goals. So this means that you have to achieve your goals, that is sending your data. What is the specific goal? What is the main goal? The most important goal is that whatever we are sending to the receiver is received by him or her as it is, and there is no change in the message. So when we are able to use the bandwidth that is available to us in such a way that it is wisely used and our specific goals are achieved, that is your bandwidth utilization. And if we have to achieve the efficiency in this process, it is done by multiplexing. So multiplexing is a technique used to combine and send multiple data streams over a single medium. So now what they're saying, suppose this is your medium, this is the medium that you have, and from here multiple signals are coming. So what does multiplexing means? Multiplexing means that it will combine all the signals into one signal and it will send only one signal entirely. मतलब पूरे चैनल में, पूरे मीडियम में सिर्फ एक ही चैनल, आपका एक ही सिग्नल जाएगा. So the process of combining the data streams is known as multiplexing. यहाँ पे आपका multiplexer लगा होगा and यहाँ पे आपका demultiplexer लगा होगा. So what does demultiplexer will do? Demultiplexer will again what you can say, divide the single signal into the number of signals that were earlier there. Okay, so this is used as this is known as multiplexing, and the hardware used for multiplexing is known as multiplexer and demultiplexer. So what is it basically? When you are given the data streams or multiple signals and you combine it into one signal so that it can pass over one medium, over a single medium, so that is known as multiplexing. So why do we need multiplexing? So the transmission medium is used to send the signal from sender to receiver. The medium can only have one signal at a time. If there are multiple signals to share one medium, then the medium must be divided in such a way that each signal is given some portion of the available bandwidth. So what they're trying to explain here, if you are here and this is your medium, okay, this is your medium, and you want to send how many signals? 10 signals you want to send. Suppose you are sending 10 signals and the bandwidth of the medium is how much? Is 100 units.
So when I have 10 signals and bandwidth is 100 units, means that one signal can take how many units? One signal can take bandwidth of 10 unit only, right? So when multiple signals are there and they share the common medium, this is a common medium, and I want to I want to send so many data streams to this receiver. So now what will happen is that this is a single medium and so many signals are there. So what will happen? Collision may occur. So multiplexing concept is used to avoid such collision. So what multiplexing will do? Multiplexing basically will combine all these into one signal, and then it will send this one signal throughout this medium, and as soon as it will reach the demultiplexer, again it will divide the signals into the different numbers. So this is what. So when you have multiple signals and they share one medium, so what will happen is medium will divide in such a way that each signal is given some portion of the available band. Okay, so why multiplexing concept is introduced? Multiplexing concept was introduced in order to avoid the collision of multiple data streams or multiple signals that are shared across the common medium. Clear, Edna? Yes, ma'am. Okay. Then what is the concept of multiplexing? So इससे आपको समझ में आ जाएगा. Suppose there what happens when we have mux. So when you will study digital logic तो आपको और clear हो जाएगा वैसे. But mux में क्या होता है कि if you have n input lines, ठीक है, so you have n input lines and you have only one output line. So this is why mux is used. No matter how many input lines you have, you will only have one output line. The major factor is this one output line. And what about demux? Demux is the opposite of mux. It says that it has one input line and n output lines. So this is what they say, that if I have n input lines, so what happened? Mux will convert what? Mux will convert this n input lines and give us one output line. And when this one will go inside this demux, it will act as input, and demux will give us n output lines. So the n input lines are transmitted through a multiplexer, and multiplexer combines the signal to form a composite signal. The composite signal is passed through a demultiplexer, and demultiplexer separates a signal to component signals and transfers them to their respective destinations. This is how your multiplexing will work. Now your multiplexing is basically of three types: frequency division multiplexing, wavelength division multiplexing, and time division multiplexing. So frequency division, as from the name only we can say that frequency division multiplexing, basically what it does, it divides your frequency of the signal. Then wavelength division basically means it divides the wavelength of the signal, and time basically allot the time slot or divides gives time to each and every signal. So you have to remember this, that frequency and wavelength are analog and time division is digital. Okay. Then now we'll study in detail ki frequency division multiplexing is also FDM. So what they are saying, frequency division multiplexing is an analog technique that can be applied when the bandwidth of a link. So if this is the link that you want to send the message on, this is the link. Okay, this is one device, and this is your another device. So what they are saying, bandwidth of the link, this is the bandwidth of link, is greater. So what was basically multiplexing? When many of your signals were coming and they were combined. So what they're saying, that bandwidth of this link, this bandwidth is greater than the combined bandwidth of the signals to be transmitted. So suppose if this bandwidth is 100, and when I combine the bandwidth of these signals, it comes out to be 90. So this is what they're saying, that bandwidth of link in hertz is greater than the combined bandwidth of signals to be transmitted. Okay, and I hope you know कि frequency जो है वो hertz में ही हम calculate करते हैं, right? So now in this, a number of signals are transmitted at the same time, and each source transfers its signals in the allotted frequency range. So what will happen is that each and every signal will have a frequency range, will have its own frequency range, and each signal has to be transmitted in that particular frequency range that is allotted to it. So there's a suitable frequency gap between the two adjacent signals to avoid overlapping.
Since the signals are transmitted in the allotted frequencies, so this decreases the probability of collision. So what happens in frequency division? Allotted frequency range. So signals are transmitted at the same time, but each source that transfers signals in this allotted rate. So each what you can say each source from different, if suppose from different sources the data is being sent, so each source is allotted a frequency range, that whatever messages you will be sending, whatever information you will be sending, the frequency, a particular frequency is allotted to you. So you cannot go beyond that frequency range. So since there are a frequency range concept, so no two adjacent signals will overlap each other, and this will decrease what? This will decrease the probability of collision as well. Okay, so a number of signals are sent simultaneously at the same time, allocating separate frequency bands or channels to each signal. Means that each signal is having a separate frequency band. So when I have given you, if you remember on Saturday, I talked about radio. कि रेडियो की एक आपको मैंने वो दी थी कि ऑल इंडिया रेडियो जो होते हैं आपके, दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, राइट? सो रेडियो में आपका ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन का कंसेप्ट यूज होता है. Therefore, to avoid interference between two successive channels, now frequency range अलॉट है and different channels या different bands हैं आपके. So हर दो channels के बीच में, between two successive channels, what they have guard bands. So what we call it as guard bands. ठीक है? So guard band का concept कहाँ यूज होता है? Guard bands का concept यूज होता है आपका frequency division multiplexing में. Next we have wavelength division multiplexing. So wavelength division multiplexing concept is same as FDM, but क्या फर्क होता है यहाँ पे? That multiplexing and demultiplexing जो है यहाँ पे, it involves optical signals transmitted through fiber optic channels by using different wavelength. ठीक है? क्या आइडिया यहाँ पे क्या है? आइडिया is that different signals of different frequencies are combined, but the difference is that these frequencies are very high as compared to frequency division multiplexing. So यहाँ पे आपका क्या यूज हो रहा है? फर्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी, that is ऑप्टिकल सिग्नल्स यूज हो रहे हैं, और कैसे? फाइबर ऑप्टिक चैनल होगा यहाँ पे. ठीक है? सो वहां पे हम किस बारे में देखेंगे? वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ योर वेवलेंथ. इफ यू सी हियर कि यहाँ पे अगर आप अपने एक आपके इसमें एग्जाम्पल दिया है, अगर आपको याद होगा कि फिजिक्स में जब हम 11th-12th में फिजिक्स पढ़ी थी, सो वी स्टडीड अ कंसेप्ट ऑफ प्रिज्म. ठीक है? सो व्हाट वाज द concept of prism? Prism अगर आपको ध्यान होगा, so what it does was कि it was given, this was the concept कि यहाँ पे अगर आपका prism है, so this was given a light. यहाँ पे आपकी different wavelengths की light आपकी आती थी, इंसिडेंट होती थी. ठीक है? and it used to meet somewhere on this prism, right? and then यहाँ से a single ray of light was reflected. अगर आपको याद हो, if this was the concept of prism, क्या होता था कि different wavelengths की लाइट आपकी यहाँ से आती थी, and single ray you can say was reflected, combining the wavelengths of all the three lights. and in similarly यहाँ पे भी क्या होगा आपका? यहाँ पे you will have two prism. ठीक है? so what it will do, यहाँ पे this prism will divide this into three different signals again with three different wavelengths. So basically it is working as mux and demux only, but यहाँ पे since we're talking about wavelength, so that is why it is treating the frequencies instead of, it is treating the wavelength instead of frequencies. ठीक है? so यहाँ पे क्या है कि if you want to understand, you can say that you want to combine multiple light sources. ठीक है? suppose these are multiple light sources and you want to combine it into a single light. ठीक है? so this combining and splitting of light is done at prism. So this is what is basically the technique of your wavelength division multiplexing, that what you are doing, you are dividing the wavelengths into first you have different wavelengths from different sources, so you have to combine it, and then you will transfer a single light or single signal or single what you can say ray to the next, to the person you want to send, and then from there you will send again the different rays of light that you are having of different wavelengths.
ठीक है. सो इफ यू विल सी हियर कि यहाँ पे भी आपका सेम चीज है एज कंपेयर टू मक्स एंड डी मक्स. मक्स वाज आल्सो डूइंग द सेम थिंग दैट it was giving you different frequencies, then it was combining it into one frequency, then this was transferred and here it was again divided into different frequencies. ठीक है. Then we have time division multiplexing. अच्छा, यहाँ पे क्या है कि एक आपका नया मेथड है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का, डेंस WDM. So what happens is it can multiplex a very large number of channels by spacing channels very close to one another. वहां पे क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि if suppose you have different channels, so you are placing the channels so close to each other जिससे कि you are able to send a large number of channels. You're able to send a large number of what you can say signals, and it will help you in achieving even greater frequency. So just remember this DWDM means dense wavelength division multiplexing. ठीक है. Any doubt कपिल है? बेसिकली इसमें सिर्फ थ्योरी है, so इसमें इतना कुछ ज्यादा वो नहीं है. कोई डाउट है इसमें? No ma'am. Then we have time division multiplexing. So what is time division multiplexing? अब देखो frequency में we are talking with related to your frequency, wavelength में we are talking with related to your wavelengths. Now time division basically क्या होता है यहाँ पे कि see in frequency division multiplexing में what we were doing that all signals that were there operating at the same time with different frequency. ठीक है. frequency division में क्या था कि signals जो थे वो same time पे operate कर रहे थे but the frequency was different. But in case of time division multiplexing, all signals operate at the same frequency with different time. So remember this difference. ठीक है. Frequency division में all signals were operating at the same time with different frequency. But in time division, all signals are operating at the same frequency with different time. So in time division multiplexing technique, the total time available in the channel is distributed among different users. So now as it is saying time division, so इसका मतलब तो clear हो रहा है. अच्छा, यहाँ पे it is WDM only, so it will be TDM. ठीक है. So it will be that कि यहाँ पे आपको जो time है it will be divided among different users. ठीक है. Obviously different users होंगे जो अपना message send करना चाहते हैं. So we will allot them time slots. So यहाँ पे they have written this. Therefore each user is allocated with different time interval known as a time slot at which data is to be transmitted by the sender. तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ आपका कि यू आर बीन गिवन टाइम स्लॉट कि इस टाइम स्लॉट में आप मैसेज भेजोगे, इस टाइम स्लॉट में यूजर 1 मैसेज भेजेगा, इस टाइम स्लॉट में यूजर n मैसेज भेजेगा. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ TDM. वन इज synchronous TDM and another one is asynchronous TDM. So what is synchronous TDM? Synchronous TDM is a technique in which time slot is pre-assigned to every device. मतलब कि हर डिवाइस को पहले ही एक टाइम स्लॉट असाइन हो जाएगा. So if each device is given some time slot, irrespective of the fact that device contains data or not. So basically what they mean is that suppose ki this is device 1, this is device 2 and this is device 3. Okay, and they both want to send some message. So now what will happen if this is the medium you want to send the message through? So suppose this is your device 1, device 2 and device 3. So now at the time slots that are given to it, suppose that D1 can send the message at 5 seconds, suppose the time of 5 seconds ka. T can be T2, the time slot for D2 is your 10 seconds suppose, and device 3 the time slot is suppose 15 seconds. Okay, so now what will happen is that कि आपने हर एक को एक टाइम स्लॉट दे दिया कि आप 5 सेकंड पे भेजना, आप 10 सेकंड पे भेजना, आप 15 सेकंड पे भेजना. नाउ एट सपोज मेन ये टाइम की क्लॉक यहाँ चल रही है, तो t equal to 5, D1 has the data high. ठीक है, D1 डिवाइस है आपकी, so it will send the data. ठीक है. Now at t equal to 10, अब t equal to 10 पे there is no message, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है D2 के पास to send anyone. So now it will not happen कि D2 वाला slot जो है D3 को मिल जाएगा. It will remain empty throughout this time slot.
So you are understanding what I'm trying to say here? अगर D2 के पास कोई मैसेज नहीं भी है अपने टाइम स्लॉट पे, so this time slot will remain empty. It will not happen कि कोई दूसरी डिवाइस जिसके पास ज्यादा डेटा है उसको we will allow to send the message. So it has to wait, this device has to wait for the allotted time slot, and when your time will occur, then ही आप यहाँ पे मैसेज आगे भेज सकते हो. So this is what is written here. In synchronous TDM, each device is given some time slot irrespective of the fact that the device contains data or not. So if the device does not have any data, the slot will remain empty. And what is asynchronous TDM? Asynchronous TDM is also known as statistical TDM. So asynchronous TDM is a technique in which time slots are not fixed. Time slots are allocated to only those devices which have the data to send. So therefore, we can say that asynchronous time division multiplexer transmits only the data from active workstation. Active workstation means जिनके पास data है send करने के लिए. So asynchronous में dynamically आप allocate करते हो time slots to the devices. So asynchronous time division multiplexer accepts the incoming data streams and creates a frame that contains only data with no empty slots. So if we talk about the difference now, so first was your frequency division multiplexing. So what is frequency division multiplexing? It uses the concept of multiplexer mux and demux, and what it does, it works in the form of that frequencies. It will combine different frequencies and then it will transmit one single frequency, and then what will happen is that at here that demux will be there. It will again divide this frequency and again it will send it to the respective sources. Then second we have wavelength. So in wavelength we work like how a prism works, that we have different wavelengths, and these wavelengths are transmitted into a single light ray of light, you can say, and from here the light will be given different back again to the sources. And third we have time division, and in time division we have slots. So we have two types of time division. One is your asynchronous and one is your synchronous. So synchronous means you can have empty slots, right? Because if you are given a slot and you don't have data, even then it will remain empty as there is no one to send the data. But in asynchronous, this is not the case. There is no empty slots. Dynamically, slots are allotted. So the most common, most important ones for you are frequency and time division. Okay. So now there's a difference between frequency and time division. So time division TDM stands for time division multiplexing. It works with digital signals as well as with analog signals. But time division works well with digital signals. ठीक है, ये ध्यान रखना कि TDM can work with digital also and analog also, but it works well and more effective in case of digital signals. So TDM has a case of low conflict. Wiring or chip. Wiring or chip means that your hardwiring part or your wiring is done simple in case of TDM. TDM is efficient. In TDM, time sharing takes place. Obviously, you are sharing the time, that is, you are giving a time slot to each and every user so that they can send their data in that particular time. And in TDM, synchronization pulse is necessary. So this means that between two devices, there must be a synchronization process, that they must synchronize with each other when sending the data. Okay. Then what is FDM? FDM stands for frequency division multiplexing. FDM works only with analog signals. It has high conflict. FDM wiring a chip is complex rather than simple. FDM is inefficient. In FDM, frequency sharing takes place, and in it, guard band is necessary. ये चीज क्लियर हुई? मल्टीप्लेक्सिंग में कोई डाउट है? कोई डाउट मल्टीप्लेक्सिंग में? ठीक है. सो इससे आपके सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस ही आएंगे. ठीक है, इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा. सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका ट्रांसमिशन मीडिया.
तो ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स कि अभी तक वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रांसमिशन चैनल एंड ट्रांसमिशन ये, सो नाउ वी स्टडी कि ट्रांसमिशन का जो मीडिया है दैट इज व्हाट वी व्हेन वी हैव टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन person to another. So this medium, what is it and how many types of medium can we have? So this is what we have to study here. So transmission media is a communication channel, ठीक है, that carries information from sender to receiver. Data is transmitted through electromagnetic signal. अच्छा ये तो आपको सबको पता है ना कि this is what we are studying at physical layer, ठीक है, and physical layer पे messages are sent in terms of your electromagnetic signals. So this is what they are saying कि transmission media में आपकी जो data है it is transmitted through electromagnetic signals. So main functionality of transmission media is to carry the information in the form of bits through your LAN. ठीक है, it is a physical path between transmitter and receiver in data communication. In fiber based network the bits in the form of light pulse. जब आपका fiber based network होगा so bits जो होंगी वो आपकी light pulse के form में travel करेंगी. In open system interconnection phase, transmission media supports layer 1. Layer 1 is what? Layer 1 is your physical layer. Therefore it is considered to be a layer 1 component. ठीक है, so क्या चीजें आपको ध्यान रखनी की? जैसे communication channel that carries information from sender to receiver. It is basically it is used for transmitting the data through electromagnetic signals. It is a physical path between transmitter and receiver, and it is a layer 1 component, that is physical layer component. तो ट्रांसमिशन मीडिया आपकी दो टाइप्स की होती है, एक होती है गाइडेड मीडिया, एक होती है अनगाइडेड मीडिया. सो अनगाइडेड मीडिया जो होती है आपकी वो वायरलेस भी हो सकती है, ठीक है, सो और ये वायर्ड हो जाएगी. ओके, सो नाउ योर गाइडेड मीडिया ऑफ थ्री टाइप्स, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक्स एंड ट्विस्टेड. एंड आपकी अनगाइडेड मीडिया है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स. सो इन वायर्ड मीडिया में जो मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे, एंड इन वायरलेस मीडिया सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होंगे. सो याद रखना वायर्ड मीडिया में क्या इंपॉर्टेंट है? मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड अनगाइडेड मीडिया में क्या इंपॉर्टेंट है? सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया. गाइडेड मीडिया में व्हाट इज इंपॉर्टेंट? मीडियम कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड इन वायरलेस मीडिया सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट. नाउ वी स्टडी एक एक करके कि क्या क्या है ये. So first we have guided media. So guided मतलब कि आप किसी को गाइड कर रहे हैं कि it is you are guiding that मतलब कोई आप बोलता है ना आपसे कि गाइड कर दो, मुझे गाइड कर दो, means कि just show me the way कि how can I move forward. So this is what it means. It is defined as the physical medium through which signals are transmitted. It is also known as bounded media. Signals being transmitted are directed and confined in a narrow pathway by using physical links. What are the features? High speed, secure, and used for comparatively shorter distances. ठीक है, so guided media में क्या है? अच्छा यहाँ पे okay, okay. So now we have first thing that we have was twisted pair. यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे the third is twisted one, and it is of two types, unshielded and shielded. So अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. Twisted. So twisted pair, it consists of two separately insulated conductor wires that are wound about each other, basically of this type. एक दूसरे से criss cross होके joined है वो. So कौन से type की wires है? Conductor wires है, insulated conductor wires. A twisted pair cable is cheap as compared to other transmission media. Installation of twisted pair cable is easy and is a lightweight cable. And the frequency range is from 0 to 3.5 kilohertz. ठीक है, ये इसके पार्ट्स हो गए. क्या कि ट्विस्टेड पेयर जो है it contains two separate conductor wires that are wound about each other. It is cheap as compared to other transmission media, and it cabling मतलब installation is easy and it's a lightweight cable. आया आपका unshielded twisted pair. So unshielded twisted pair, अगर आपको मैं डिफरेंस दिखाऊं, if you see this figure, ये फिगर क्लियर है आपको, विजिबल है क्लियरली? If you see this figure, so यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो ये रेड बॉक्स बना रखा है इन्होंने, यहाँ पे there is no
what you can say shielding type thing. और यहाँ पे अगर आप देखो, so यहाँ पे you can see that there is a type of shield that is wrapped around these what you can say wires. So ये आपका shielded twisted pair cable हो गया, और ये आपका non shielding unshielded twisted pair हो गया. ये क्लियर हुआ आपको? और ये एक दूसरे से बाउंड अबाउट हो रखे हैं, so this is what is twisted. ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है. So this is what is shielded and unshielded. Now they have told us that unshielded twisted pair is widely used in telecommunication. This type of cable has the ability to block interference and does not depend on physical shield for this purpose. So physical shield का use क्यों होता है? Basically physical shield use होती है कोई भी इंटरफेरेंस आ रहा है अगर, तो उसे ब्लॉक करने के लिए, ठीक है. बट इसकी इस जो यहाँ पे जो आपके केबल्स होंगे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में, उनकी इनबिल्ट होगी ये एबिलिटी, उनमें पहले से ही होगी कि वो इंटरफेरेंस को ब्लॉक कर सकते हैं. सो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में शील्ड इसलिए नहीं है बिकॉज इट हैज द केबल हैज अ एबिलिटी to block the interference and does not depend on physical shield for this purpose. अब यहाँ पे अभी कुछ कैटेगरीज हैं, 1 to 5 कैटेगरीज हैं basically. Category 1 is used for telephone lines that have low speed data. Then category 2 can support up to 4 Mbps. Category 3 16, category 4 20 and category 5 200. So category 4 को आप long distance communication के लिए भी use कर सकते हैं. So this is your unshielded twisted pair. What is shielded twisted pair? Shielded twisted pair is a cable that contains the mesh, जो हमने अभी फिगर दिखाई है आपको, ये surrounding the wire that allows the higher transmission rate. This type of cable consists of special jacket type of thing to block the external interference. It is used in fast data rate, Ethernet and in voice and data channels of telephone lines. Ethernet basically आप पढ़ोगे जब अभी हम पढ़ेंगे LAN में आपका आता है Ethernet, ठीक है. So आपकी अलग से होगा, so we'll study there. So shielded twisted pair और unshielded में डिफरेंस क्लियर हुआ. अनशील्डेड जो केबल्स होते हैं आपको पहले से ही उनमें ये एबिलिटी होती है दैट दे कैन ब्लॉक द इंटरफेरेंस, सो इसलिए वहां पे आपको एक्सटर्नल एक शील्ड की जरूरत नहीं है. बट शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है कि दिस इज यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. अब आपका है कोएक्सियल केबल. इसमें क्या है? इट हैज अ आउटर प्लास्टिक कवरिंग कंटेनिंग 2 पैरेलल कंडक्टर्स ईच हैविंग अ सेपरेट इंसुलेशन प्रोटेक्शन कवर. सो यहाँ पे अगर आप ये देखो कोएक्सियल केबल में, सो ये आपका आउटसाइड इंसुलेशन हो गया और ये आपका इनसाइड इंसुलेशन हो गया, ठीक है. यहाँ पे उसके ऊपर जो इन दोनों को डिफरेंस मतलब इनके जो बीच का लेयर है उसको आप बोलते हो कॉपर मेश, और यहाँ पे आपका अंदर है कॉपर वायर. सो यहाँ पे आपका क्या होता है बेसिकली कोएक्सियल केबल जो है, कोएक्सियल केबल मैंने आपको हमने बेस बैंड और ब्रॉडबैंड मोड पढ़ा था अगर याद हो आपको. सो बेस बैंड मोड जो होता है वो होता है डेडिकेटेड केबल बैंडविड्थ की एक ही टाइप के सिग्नल्स को वो लेता है. एंड ब्रॉडबैंड मींस दैट कि मल्टीपल सिग्नल्स आर अलाउड. सो ब्रॉडबैंड में क्या है कि इट विल डू, इट विल स्प्लिट your bandwidth into separate ranges. ठीक है. So cable TVs and analog television networks widely use the coaxial cables. याद है ना baseband mode और broadband mode? याद है या भूल गए? So the advantages क्या है coaxial cable की? First advantage है कि it has high bandwidth, better noise immunity, easy to install and expand, और ये है inexpensive. And what is disadvantage? Single cable failure can disrupt the entire network. अगर आपका coaxial cable में एक केबल भी फेल हो गया, so आपका पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रप्ट हो जाएगा. So this is coaxial. अब ये आया आपको ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर केबल आपने देखा है ऐसा होता है, मतलब कि it uses the concept of reflection of light. Optical fiber cable uses the concept of reflection of light through a core made up of glass or plastic. The core is surrounded by a less dense glass or plastic covering called cladding. It is used for transmission of large volumes of data. The cable can be unidirectional or bidirectional. ठीक है. सो क्या आपकी क्या चीजें आई गाइडेड में? हमने वी स्टडी 3 पार्ट्स. दैट इज फर्स्ट इज योर
यहाँ पे जो आपकी जो कोर है, जो आपकी केबल की कोर है, उसको आप एक डेंस ग्लास या प्लास्टिक कवरिंग से करते हो कवर, ठीक है, सराउंड करते हो अपनी जो आपका केबल है, आपका बेसिकली केबल जो आपका सपोज दिस इज योर केबल, सो आप इसको सराउंड करते हो विद प्लास्टिक कवरिंग, जैसे आपकी ये प्लास्टिक कवरिंग है या फिर कोई डेंस ग्लास की कवरिंग से आप करते हो, तो उसको आप क्लैडिंग बोलते हैं, तो उस कवरिंग को आप क्लैडिंग बोलते हैं। सो गाइडेड मीडिया 3 टाइप्स के हैं, बताओ कौन कौन से हमने पढ़े अभी? कोएक्सियल, ओके, ट्विस्टेड पेयर, ओके, ट्विस्टेड पेयर के कौन कौन से पार्ट्स हैं? ट्विस्टेड पेयर के पार्ट्स क्या क्या हैं? ओके, शील्ड एंड अनशील्ड, ठीक है, और कोएक्सियल के? बाकी सब? So, अब आएगा हमारा दैट इज योर unguided media, that is wireless media, ठीक है। So unguided transmission is used for transmitting the electromagnetic waves without using any physical medium, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी physical medium नहीं है, you are just using your electromagnetic waves for traveling or transmitting your messages, so it is also known as wireless transmission. So in unguided media, air is the media through which electromagnetic energy can flow easily. अब इसमें आपकी 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। पहला हम क्या पढ़ेंगे? रेडियो वेव्स, सो दैट इज रेडियो ट्रांसमिशन. So radio waves are the low frequency electromagnetic waves ranging from 3 kilohertz to 1 gigahertz. As the radio waves are low frequency waves, they can penetrate walls and one can easily receive signals even if you are inside the building. So what it means is that suppose कि आप एक building में हो, this is a building and there is few communication that is going outside and few communication that is going inside. So now if you are communicating with each other using radio waves, okay, and there are 2 persons that are communicating with each other and 2 that are outside. So what will happen is that if they are communicating with radio waves and this is also communicating with radio waves, so now this radio wave can easily penetrate the wall of this building and this radio wave can easily penetrate the wall of the building. So this is what they're saying, it is very difficult to prevent or isolate the communication inside and outside the building. So this is what is radio transmission. So first thing is that they are low frequency waves, okay, low frequency electromagnetic waves. So since they are low frequency, they can easily penetrate the walls and one can receive signals even if it is inside the building. So this property of radio wave prevents from isolating the communication inside and outside the building. This is you can say this is the drawback of radio wave as well, that it can easily penetrate the walls and you can even receive the signals that are not meant for you. Microwave, microwave is electromagnetic waves with frequency ranging from 1 to 300 gigahertz. यहाँ पे क्या frequency 3 kilohertz to 1 gigahertz, और यहाँ पे क्या है 1 to 300 gigahertz. So that is was from 3 kilohertz to 1 gigahertz and यहाँ पे 1 gigahertz to 300 gigahertz.
ठीक है. So the microwaves are unidirectional in nature and due to which it propagates in line of sight mode. अब line of sight mode propagation क्या हुआ? In line of sight propagation, the source transmitting antenna and the receiving antenna needs to align in each other in such a way that they must be facing each other, which enables point to point transmission. मतलब कि if this is the thing that two devices that are interacting with each other, so they must face each other while interacting. This is line of sight propagation, that is point to point transmission. ठीक है. So microwave transmission क्या हो गया? Unidirectional in nature. It propagates in line of sight mode. In line of sight means source transmitting antenna and the receiving antenna needs to be aligned to each other in such a way that they must be facing each other. Antenna basically antenna आपकी device होती है that is used for transmitting and receiving the signals. ठीक है. So यहाँ पे जो दोनों के source और receiver के जो antenna होंगे, they must be aligned in such a way that they must be facing each other, which enables point to point transmission. Then we have infrared frequency. अब infrared is the highest frequency wave ranging from 300 gigahertz to 400 terahertz. The infrared transmission uses line of sight propagation and thereby is used for short distance communication. अब यहाँ पे क्या होता है? As infrared transmission is the high frequency waves, they cannot penetrate the wall, so you can easily differentiate between communication going on inside and building and the one that is going outside the building. There is no chance of interference. जैसे most popular example of infrared transmission is daily जो आप remote use करते हो for operating your AC, for operating television, for operating music system. So this is an example of infrared transmission. So अगर आपसे पूछा जाए कि first अगर कोई आपसे पूछे माइक्रोवेव इज कंटेन्ड इन हाई डिस्टेंस कम्युनिकेशन, हाँ यस ठीक है. अगर कोई आपसे पूछे कि लाइन ऑफ साइट जो है आपका कौन से उसमें यूज होगा, सो व्हाट यू विल से? लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन या लाइन ऑफ साइट कौन से वेव्स में यूज होता है, सो क्या आंसर बोलोगे आप? बस माइक्रोवेव में होता है. माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड दोनों में आपका लाइन ऑफ साइट का यूज होगा. ठीक है. एंड इंफ्रारेड बेसिकली क्या होती है? इंफ्रारेड आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, सो वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं वॉल को इजीली. सो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कम्युनिकेशन इनसाइड द बिल्डिंग है या कम्युनिकेशन आउटसाइड द बिल्डिंग. जैसे कि एग्जाम्पल है आपका एसी या टेलीविजन का रिमोट. इफ यू सिटिंग एट वन रूम एंड यू आर वाचिंग अ टीवी एंड इफ यू टेक द रिमोट टू अनदर रूम एंड यू ट्राई टू चेंज द चैनल, आप नहीं कर पाओगे. सो बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रारेड ट्रांसमिशन. सो अब अगर मैं बात करूं मीडिया की आपके, सो मीडिया इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, राइट. फर्स्ट हो गया आपका गाइडेड मीडिया एंड सेकेंड हो गया आपका अनगाइडेड मीडिया. गाइडेड मीडिया आपके थ्री टाइप्स के पढ़े हमने: ट्विस्टेड, कोएक्सियल एंड फाइबर. एंड अनगाइडेड हमने पढ़ी है थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स. ठीक है. अब ट्विस्टेड आपके टू टाइप्स के हो गए, दैट इज शील्डेड and unshielded. Similarly, coaxial आपके टू टाइप्स के हो गए, बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड. और अनगाइडेड आपकी वेव्स हो गई, दैट इज योर रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड. ठीक है. सो अगर कोई टेल मी रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी
करेक्ट 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज 3 किलोहर्ट्ज टू किलोहर्ट्ज नहीं कीर्ति 1 गीगाहर्ट्ज है ठीक है माइक्रो की क्या है 1 gigahertz to 300 gigahertz. क्या Ma'am, 1 to 300 gigahertz. करेक्ट 1 gigahertz to 300 gigahertz and what about infrared 300 gigahertz to 1 terahertz. 400 टेराहर्ट्ज ठीक है सो रेडियो वेव्स आपकी क्या करती है रेडियो वेव्स की क्वालिटी क्या है कि वो कौन सी टाइप की फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं लो फ्रीक्वेंसी करेक्ट लो फ्रीक्वेंसी वेव्स ठीक है इंफ्रारेड क्या हो गई आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स सो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स penetrate the wall easily penetrate the wall and infrared high है so cannot penetrate the wall okay so this is basically the different types of media so यहाँ पे अब इससे कोई क्वेश्चन वैसे कभी इतना ज्यादा पूछा नहीं गया है प्रीवियस इयर्स में बट स्टिल आपके टॉपिक का पार्ट है सो आई हैव इंक्लूडेड हियर ठीक है अब जो आपका मेन जो बच रहा है वो है स्विचिंग सो वील स्टडी टुमारो बट फ्यू क्वेश्चंस यू हैव ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सो नाउ दे हैव गिवन यू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and you have to tell the correct answer. So they are saying frequency division multiplexing is a technique that can be applied when the bandwidth of a link is greater than combined bandwidth of signals to be transmitted. Wavelength division multiplexing is an analog multiplexing technique to combine optical signals. WDM is a digital multiplexing technique and TDM is a digital multiplexing technique. So अब आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा So पहला स्टेटमेंट है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इज ग्रेटर देन कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड ये बिल्कुल करेक्ट है एंड ये एज इट इज ये जो स्टेटमेंट है ये कॉपी किया गया आपकी बुक से एज इट इज उन्होंने कॉपी किया है ठीक है फिर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपका एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग है सो मैंने हमने पहले पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग थी FDM WDM एंड TDM राइट सो ये जो स्टार्टिंग की 2 थी these were your analog and this one was basically a digital so अब आप यहाँ नोटिस करो कि B और C में दोनों में दे आर सेइंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स की वेवलेंथ जो है वो एनालॉग की मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है और यहाँ पे भी वेवलेंथ डिजिटल है सो इन दो में से एक तो गलत है ही सो B is also correct but C is wrong. Now what about D? TDM is a time digital multiplexing correct. So A, B, D are correct and C is false. So correct answer हो गया option number D. ठीक है. Then next you have which of the following transmission media works on the principle of total internal reflection?
यस बताओ, बस 2 लोगों ने आंसर दिया इसका अभी तक। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज अभी ही थोड़े टाइम पहले मैंने आपको यहाँ पे इसी स्लाइड में, फाइबर ऑप्टिक्स की स्लाइड में आई थिंक हमने पढ़ा था दैट इट इज फॉर रिफ्लेक्शन, it uses the concept of reflection of light. ठीक है, so total internal reflection also is a part of reflection, concept of reflection only. So आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, now yes there were few confusion, so मैं वो confusion आपका क्लियर करना चाहती हूँ, just एक मिनट। सी, जो कंफ्यूजन था कि कब हमें 2 रेज टू पावर लेना है और कब हमें 10 रेज टू पावर लेना है, सो बेसिकली जो आपका डेटा है, ठीक है, या तो वो बैंडविड्थ की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, या वो आप डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, जब आप बैंडविड्थ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो आती है पावर्स इन 10। ठीक है, और जब आप डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो आपकी पावर्स आती है रेज टू 2। ठीक है, सो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इट इज 1 किलोबाइट, सो इट मींस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 2 रेज टू पावर 10। ठीक है, व्हेन आई से 1 megabyte, so this means that I'm talking about 2 raised to power 20. But when I say 1 kbps, that is 1 kilobyte per second, so then it means that I am talking about 10 raised to power 3 bit per second, bytes per second. ठीक है, then we have 1 mbps, मतलब अगर पर सेकंड की बात आ जाए, अगर we are talking about per second, so we always have the power of 10। ये चीज क्लियर हुई, ये डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? सो आपके जो ट्रांसमिशन डिलेज होते हैं, कोई भी डिले का जो क्वेश्चन आएगा वो आपका हमेशा पर सेकेंड की टर्म में होता है, सो दैट इज वाई वहां पे हमेशा आपका 10 रेज टू पावर आता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट, जब आपका सिर्फ डेटा के बारे में बात करते हो, 1 किलोबाइट ऑफ डेटा, 1 MB ऑफ डेटा, तो वहां पे आप हमेशा 2 रेज टू पावर की बात करोगे। क्लियर हुआ आपको ये? यस मैम। ठीक है, अब लेट मी जस्ट फाइंड अगर कुछ न्यूमेरिकल्स मुझे मिल जाए। कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग। Ma'am, see that question which I have sent, question number 86, that is in this chapter, ma'am. Question number 86. You designed a link layer protocol for link with bandwidth this and over a fiber link with length this. Length और bandwidth दे रखी है और आपको speed दे रखी है, right? So what is the propagation delay? So what is the formula of propagation delay?
distance by propagation speed. राइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको? डिस्टेंस इज 800 kilometers and speed is 2 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड. सो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड 2 zeros will cancel out 2 zeros, so it will be 2 and 4. So it will be 4 by 1000 seconds, right? सेकेंड ऊपर चला गया, seconds because it's per second. ठीक है, आपका आंसर क्या है? मिली सेकेंड में है. सो नाउ मिली सेकेंड क्या मतलब हुआ? मिली सेकेंड मीन्स हाउ मेनी सेकेंड्स? 10 raised to power minus 3 seconds, right? यहाँ पे कितना है? सेकेंड में है. सो दिस मीन्स दैट आई नीड टू, दिस इज 1/4000 into 10 raised to power 3 and 10 raised to power minus 3 seconds. यही मतलब हुआ, राइट? Yes, ma'am. ये चीज क्लियर हुई? ये वाला स्टेप क्लियर हो गया? मैम नीचे 1000 है, ऊपर नहीं जाएगा मैम? क्या? 1000 मैम. हाँ, मैम 4/1000 ऊपर नहीं जाएगा इसमें? ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि देखो ये आपका 4 है, यहाँ आपका नीचे 1000 है. ये 4/1000 और किलोमीटर पर सेकंड है, तो पर सेकंड मीन्स कि सेकंड आपको ऊपर चला गया, तो 4/1000 सेकंड हो गया. और आपका आंसर जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, द ऑप्शंस आर गिवन इन मिली सेकंड. सो मिली सेकंड इज 10 raised to power minus 3 सेकंड. सो दिस मीन्स दैट इफ अगर आपका सेकंड में होता तो ये आपका फाइनल आंसर होता, बट इन मिली सेकंड दे आर टॉकिंग. सो मिली सेकंड मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट 10 raised to power minus 3 सेकंड. So how you will calculate 10 raised to power minus 3? So हमने क्या पढ़ा है कि अगर if you are adding something, so you have to subtract it as well. अब यहाँ पे अगर आप 10 raised to power minus 3 कर रहे हो, so आपको 10 raised to power 3 भी करना पड़ेगा. Why? Because when you will add the powers, because the bases are same, so you get 10 raised to power 0, that is 1. So when you multiply it with 1, तो आपका आंसर यही आएगा exactly. So आपको आंसर चेंज नहीं करना है अपना, you just have to change the powers. ठीक है, so ये हो गया आपका. And now if you will see this 1000 is also 10 raised to power 3 only. This 1000 को मैं 10 raised to power 3 लिख सकती हूँ, right? ठीक है, so I can cancel out this with this. So क्या हो गया? 4 millisecond. तो आपका आंसर डी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो. ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज a slotted aloha network transmits 200 bit frames. अब यहाँ पे आपके bit frames की बात आ गई, तो थ्रूपुट का जो frames के पर्सपेक्ट में जो होगा, तो जब हम आपका डेटा लिंक क्लियर स्टार्ट करेंगे, कल आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा स्विचिंग के बाद से, सो वो आपको और वहां से फिर क्लियर पता लगेगा. ठीक है, Ma'am, one question I have seen, consider a code with only 4 valid code words. भेजा है आपने ये? No, ma'am, no, not. क्या No, ma'am. बताओ, क्या बोल रहे हो? 4 valid code words. Yes, ma'am. Then, okay, ma'am, I will send. This code has distance 5. If हाँ, the तो code आपका word... हैमिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा ना, हैमिंग डिस्टेंस का. तो अभी जब हम करेंगे तो आपको वहां पे मैं क्वेश्चंस कवर करा दूंगी, डोंट वरी. Hamming distance. Okay. हाँ, हैमिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना, तो उसमें आपका क्या होता है कि अगर आपका हैमिंग डिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि बेसिकली हम डिफरेंस देखते हैं कि अगर आपका 1 1 1 1 है और यहाँ पे 0 1 1 1 है, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे ये सेम बिट है, सेम बिट है, सेम बिट है, ये आपके अलग बिट है. तो वो आपका हैमिंग डिस्टेंस होता है कि 1 हैमिंग डिस्टेंस, 1 बिट हैमिंग डिस्टेंस कोड है इसका मतलब. ऐसे कुछ करके आप पढ़ोगे. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको पावर्स जो है वो ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में आपका कौन से यूनिट पे आंसर दे रखा है एंड आपको कौन से यूनिट में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो ये चीज ध्यान रखना. बाकी आज आपका यूट्यूब पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस की क्लास है. सो यह वहां पे आई कवर, जो यहाँ पे मैंने आपको बोला था डिस्क्रिप्ट में हमारा बच्चा है ना वो पार्ट, सो वहां पे वी विल कवर दैट. सो whoever wants to study प्लीज वहां पे आ जाना. ठीक है,
Ma'am, if Friday you have taken the class group theory revision, हाँ, ma'am, उसकी please PDF upload मैं that. आपको मैं भेज दूंगी। Okay, ma'am. ठीक Thank है, you. ओके, एनीथिंग एल्स? इसकी PDF No, मैं आपको आज भेज दूंगी पूरी, एंड स्विचिंग के लिए फिर आई विल मेक अनदर न्यू PDF, सो स्विचिंग आपकी हो जाएगी, और फिर आपका स्विचिंग आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्विचिंग से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं स्विचिंग से, तो हाँ। ma'am, give some assignment, give some numerical according this. एक्चुअली क्या है ना कि देखो कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो न्यूमेरिकल्स आपके हैं वो बेसिकली बहुत सारे कंसेप्ट्स को ना मिक्स करके, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे न्यूमेरिकल्स है नहीं, इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स पर्टिकुलरली। बाकी अगर आपको और सब्जेक्ट से चाहिए तो आई कैन फाइंड एंड आई कैन गिव, जो Yes, आपने पढ़ yes, ली ma'am. ऑलरेडी, Yes, ma'am. ठीक है, Please make that type of assignment. चलो ठीक है, ओके। Yes, ma'am. आपको तो उसमें फिर मैं मल्टीपल क्वेश्चंस करके आपको दे दूंगी, ठीक है, अलग अलग जो भी Yes, आपने ma'am. सब्जेक्ट्स पढ़ लिए उनके क्वेश्चंस ऐड करके फिर अब आपको असाइनमेंट टाइप का देके फिर आप ट्राई कर लेना, फिर एक दिन हम विल टेक वन डे टू डिस्कस दैट, 5 to 10 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और फिर आपको 1 वीक अराउंड या 2-3 डेज मिलेंगे, उसमें आप करना, एंड देन Yes, उसके ma'am. बाद फिर विल डिस्कस, ठीक है। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. एनीथिंग एल्स? No. चलो ठीक है, ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय Thank बाय। you, ma'am. Thank you.